Yes, ma'am. Yes, sir. Good afternoon, ma'am. All right. Yeah. So I think we should start. I'll introduce myself. Please don't bother introducing me if MMTTC office is there. Yeah. My name is Professor Divya Joshi. I'm Professor Director at the UGC Malviya Mission Teachers Training Center, which is located in Nainital in Uttarakhand. You must all have heard of Nainital. So this is Kumaon University, Nainital, and I'm Professor Director there. Just like you have UGC MMTTC in AMU, there are 116 such centers across India. So we are a very old center. We started our journey in 2007, and I have been working in this center since then. Today I've been asked to talk to you about one of the themes, sub-themes of the UGC sensitization program on NEP. And the sub-theme is strategic planning, management and governance. So this, we are talking about the FIP. I'm really sorry, faculty induction program. You are all in the faculty induction program, yes. So faculty induction program, this is module 10. Strategic planning is module 10, all right. So module 10 is, you know that the Guru Dakshata program, which is also called the faculty induction program, has modules in it. There are 10 modules. And module 10 is the one that deals with these governance, management, and planning aspects. Now, you'll often have wondered why you are all like assistant professors and you have just new entrants. This is an orientation program, start of your journey. You'll wonder why you are being asked to learn about planning and management. You are still too junior. मन में आता है ना कि अभी हम तो इतनी शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हो सकता है आप में कुछ लोग कॉन्ट्रैक्चुअल या अभी रेगुलर भी नहीं हो, तो आपको लगेगा कि हमको क्यों प्लानिंग कराई जा रही है या मैनेजमेंट, हम कोई वाइस चांसलर्स तो है नहीं. बट ये जरूरी है कि शुरुआत से ही जो आपकी ये जर्नी है, करियर है, उसके शुरुआती दौर से ही आप लोग जो है आपको ओरिएंट किया जाए टुवर्ड्स लर्निंग गुड प्लानिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड गुड पॉलिसी ओरिएंटेशंस. क्योंकि आप लोग समय बीतते एकदम बीत जाता है समय एंड देर नहीं लगती, टाइम फ्लाइज एंड वेरी सून यू विल बी सीनियर. It's not like you are always going to be assistant professors and always going to be stuck where you are. You'll soon, time will fly, and one day you'll realize you're deans, directors, and you will be, I hope someday some of you will be vice chancellors also. Maybe you'll be vice chancellors and pro vice chancellors, rectors. So you have a long journey ahead of you. And I wish and I pray that your journeys should be very successful ones. यही प्रार्थना है कि आपकी ये जो ये करियर है बहुत सफल होगा और आप बहुत जल्दी बहुत सीनियर बन जाएंगे और आपके अलग अलग पदों में होंगे जहां पर आपको इन सब टास्क्स में भी एंगेज करना होगा. यू विल बी एंगेज्ड इन प्लानिंग प्रोसेसेस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यू विल बी एंगेज्ड इन मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एंड दैट इज वेयर यू विल एनकाउंटर दीज इश्यूज. और एक दूसरी अनोखी चीज होती है, आज जिन चीजों पर हम बात करेंगे उसमें कई बार ऐसा होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल कॉन्ट्रैक्चुअल इन कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी. कितने लोग हैं जो अभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी में हैं? नो, यू आर ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज, regular appointments. That's great. Yes, ma'am. Yes, That's ma'am. great. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So about 30 to 40% contractual अभी चल रहा होगा. हाँ, because India, across India, appointments have been delayed. In the recent past, the pace of appointments at the level of assistant professor has been slow. Very few universities are actively doing appointments, so the number of contractual employees is quite high. So what happens is that very often when you are assistant professor, your HOD or your seniors, they give you a lot of work to do. Like they get some work to do and they pass it on to you. कई बार आपको ना वो HOD के पास काम आता है, जैसे NAC का विजिट होने वाला है, एंड वो जो काम होता है ना, ऑल द डर्टी वर्क, ऑल द टीडियस वर्क, ये लिखो, वो बनाओ, वो रिपोर्ट बनाओ, वो PPT बनाओ, तो दैट इज गिवन टू द जूनियर्स.
राइट. सो व्हेन इट इज गिवन टू द जूनियर्स, जब जूनियर को काम दिया जाता है तो वो एक्चुअली करना जूनियर को ही पड़ता है. तो वो बाद में आपके जो एचओडी है, जो सीनियर है, उसको करेक्ट कर लेते हैं. दे करेक्ट, डू करेक्शंस एंड दे मॉडिफाई इट एंड दे सबमिट इट. तो वो सबमिशन तो होता है कि एचओडी ने काम किया, पर करते, आई नो दैट दिस इज अ हार्श ट्रूथ, बट इन 80% of the places, it is the junior most people who do the most work in the department. That is all this paperwork, ना, जो आदमी इस तरह का राइटिंग का काम आता है, पीपीटी बनाना है और डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन होना है, the hard work you people do. So it is, and it's okay, you learn. It's not a bad practice because that is how you learn. Because अगर हम जैसे I'm a senior, if मैं सारा काम अपने हाथ में ले लूं, I monopolize it, then what happens? You'll never learn. If you are my junior, you will never learn. आप कभी नहीं सीख पाएंगे. फिर एक दिन आपको अचानक, आज से after 15 years, अचानक एक दिन आपको हम चार्ज दे देंगे, फिर आप कहोगे कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है. तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, बुरा नहीं है, बट आपको, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सीखें. जैसे कि हाउ टू राइट your mission statement, how to write your vision statement. Each institution, each university, each college has their own. आपने आजकल देखा होगा वेबसाइट, अब तो इंटरनेट का जमाना, आईसीटी, डिजिटल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. So each person has what? You have your websites, you have your independent websites. तो कोई भी सर्च करता है, जैसे एएमयू खोला, तो एएमयू का vision about us, if you'll read about them, they'll have a mission statement, a vision statement. They will state their goal of the university. ठीक है, लक्ष्य दिए होंगे, उनका विजन, मिशन दिया होगा. तो ये सब भी इसमें आता है, प्लानिंग प्रोसेसेस में आता है, मॉड्यूल 10 में. ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं शुरुआत करती हूँ. आई एम यूजिंग अ पावर पॉइंट जस्ट टू कीप माई सेल्फ स्ट्रक्चर्ड. गूगल मीट में एक दिक्कत ये आती कि कई बार अगर हम अपनी पूरी विंडो शेयर करते हैं तो आप लोग, you can't communicate because I can't see your faces, but the point is you can always interrupt me. अच्छा, कौन लोग हैं जिनको बस अंग्रेजी बोलने में दिक्कत है? कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हिंदी में भी बात करी जाए? जी मैम. I will repeat key points. I will repeat. मुख्य बिंदुओं को मैं हिंदी में भी, समय ज्यादा लगता है, समय 1.5 गुना हो जाता है, परंतु मैं जो है समय निकाल के आई विल एक्सप्लेन मेजर पॉइंट्स. बीच में मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रोक के भी आपसे बात करूंगी. मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा है, तो जो अननेसेसरी स्लाइड्स हैं उनको मैं स्किप करूंगी. आप इसको मटेरियल की तरह चाहेंगे तो वील शेयर इट लेटर. ऑलराइट, वील डू दैट. आप ऐसा करिएगा, आप बस अपना माइक खोल के एक्सक्यूज मी कह के अपना प्रश्न या अपनी बात आप रख सकते हैं, नहीं तो सेशन के आखिर में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे. ऑलराइट, सेशन के आखिर में ही 10-15 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि बीच में आखिर में ही 10 मिनट, आखिर में ही. ऑलराइट डिम्पल, थैंक यू, we'll do that. जी, थैंक यू मैम. Okay, just give me a minute, I'll just share my presentation with you. Can you see my presentation? Yes, ma'am. Why are we studying this topic today? Because जो गुरु दक्षता की गाइडलाइंस हैं, FIP की गाइडलाइंस हैं UGC की, वो इस लिंक पर आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं, उस गाइडलाइन को. उसमें मॉड्यूल 10 का नाम ही ये है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के, आपको हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग करें. We have to do capacity building so that you can deal, you even at assistant professor level and all through your career, you have the ability to cope with changing circumstances. आपने देखा कोविड आया तो कितनी चीजें बदली. किसी का माइक कहीं पर खुला हुआ है, I can hear a rustling. प्लीज माइक चेक कर लीजिए, जिसका भी खुला है उसका माइक ऑफ कर लीजिए. थैंक यू. तो क्या है कि बहुत जल्दी बदलाव आ रहे हैं शिक्षा जगत में भी. द एजुकेशन वर्ल्ड इज चेंजिंग इंटरनेशनली एंड वेरी रैपिडली. Academics is changing. It's changing due to the advent of ICT, the digital media, digital technologies. Now AI is coming, AGI is coming, and then circumstances like COVID-19
sudden disruption and then major changes. NEP, the coming of the NEP 2020, big changes, radical changes. तो इन बदलावों से actually impact किस पर पड़ता है? All the stakeholders, but you and I as teachers, we are major stakeholders. So we have to bear the impact. करिकुलम नया बनाना है, हमने बनाना है, सिलेबस बदलना है, हमने बदलना है, क्लासेस लंबे हुए, हमारे हुए, इंक्लूजन नया करना, we have to bring in all kinds of people into inclusion, you bear the brunt. तो आप में को ये क्षमता आपकी हमने विकसित करनी है कि जो बदलाव आ रहे हैं बाह्य दुनिया में या शिक्षा जगत में, उनसे आप उनका मुकाबला कर सके सफलतापूर्वक. You should be successful in dealing with whatever changes come. So far, so many changes have come, but you never know. Suddenly something might happen, you know, and you might, again, a big jolt, a big shock can come. So those shock waves that come, you should be ready to deal with them, right? Through how? Now we'll talk about it. How? Of course, the college or the university will have to change its management practices. And also because performance of your college should not go down. कि पता चला फिर से कोविड जैसी कोई चीज हो गई और आपका बिल्कुल कॉलेज ठप हो गया, क्लासेस ही नहीं हो पा रही, यू आर नॉट एबल टू कंडक्ट क्लासेस, एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. वी हैव टू plan so well so that we don't fail at any step, right? The need, what is the need? Pace of change is very fast now. पहले से बहुत धीमे धीमे चीजें बदलती थी. Like India became independent in 1947. So the change from 47 to maybe even 77 or 87 was very slow. Very slow pace of change. Universities were just like they were, because I know, like, for example, look at me. I was in college I was in university from 1986 onwards, right? I did class 12 in 1986. So my experiences with the college system were almost similar to that of my, you know, elder sisters 15 years ago, or very like my father's in the 1950s. So change was not so rapid. But now what I am experiencing and what my daughter experienced after 30 years, my daughter is 30 years younger to me, the change is very drastic. एकदम सब कुछ बदल गया है from 87 to maybe from 84 to 24. So change has been quite dramatic, in fact, in the past 10 to 20 years. Number two, now we need to respond to society. We can't live in, you know, isolated towers like Ivory Tower. ऐसा नहीं कि हम एक यूनिवर्सिटी एक किला सा है, उस किले में जाके बैठ गए, वहां जो मन आया अपनी रिसर्च करी बैठ करके, और हमने अपने कुछ कर रहे हैं, थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आ रहा है पढ़ा दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ा दे रहे हैं, एंड ऑफ द स्टोरी. नो, आज की नीड है इंटरनेशनली ऑल्सो, एंड द NEP also asks us to be very responsive to what's happening in society. हायर एजुकेशन की लिंकेज सोसाइटी से बहुत जरूरी है. लोकल कम्युनिटीज के लिए हमने काम करना है, उनकी नीड्स को असेस करना है, उनके प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए जाना है. दैट इज व्हाई. और तीसरी बात है, लाइक आई सेड, टू सर्वाइव, बिकॉज अगर आपको NEP के बारे में पता है तो NEP का एक्चुअल जो विजन है वो ये है कि अब जो ये पहले से होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेज अलग, इन डिस्टिंक्शंस को अब वो ब्लर करना चाहती है. वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा government funded universities should behave more like private universities now. Why? Financial management. They should try to manage themselves effectively. तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट, whether it's a central university or state university, खूब पैसा बर्बादी होती थी, wastage of money, improper utilization of funds, कोई हिसाब ही नहीं है, लॉस में चल रही है. अगर it was a private university तो वो लॉस में चलती, पर सरकार सारा लॉस कुशन करती थी. The government was cushioning the financial, you know, inefficiencies of government run colleges. And मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. नेटवर्क इशू लग रहा है.
नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू होगा सर। पीपीटी भी नहीं शो कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। क्या मैम ने ज्वाइन नहीं किया क्या अभी? अभी तो नहीं। ज्वाइन कर रहा था उस टाइम, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके थैंक्स।
किसी को आवाज नहीं आ रही है, ऐसा मुझे ही तो नहीं आती। नहीं सर, किसी को आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज। ओके सर। सर को इन्फॉर्म कर दिया जाए, जयदीप सर को। आई थिंक यस, सर को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं और सिग्नल भी आ रहा है, जा रहा है बार बार। एक्चुअली तो दिक्कत भी हो रही है। एक बार सबको कॉल कर ले रहा हूँ। जी सर। What was the problem? सर कोई देयर बताएगा क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कोई वॉइस नहीं है और मेरा मैम आवाज लेफ्ट सर। सर वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गई मैम? डिस्कनेक्ट हो गया। कोई ऐसी बात तो नहीं मतलब? नो सर। नहीं Okay, सर। I'm just calling her. She's not picking up the call. Just hold on. इन बिटवीन लेक्चर हो गया।
आज क्लास होगी या नहीं होगी? जयदी सर को फोन करके बता भी Just दिया wait, मैंने। just wait. I'm just contacting her. Just wait. ओके सर, ओके सर। ओके, थैंक यू ओके सर। सर। आवाज नहीं आ रही है। पार्टिसिपेंट्स प्लीज वेट बिकॉज मेरी मैडम के टीम से बात हो गई है अरविंद सिंह जी से, और वो अभी उनको मैडम को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। मतलब मैम को नहीं पता है कि डिस्कनेक्ट। वो असल में होता है। Yeah, I must have disconnected. I'm back. I'm back. I must have disconnected. I was calling I'm really you. sorry. I was calling you. I didn't have my phone with me. My office. I'm sitting in another room. I'm not sitting in my office. Okay. I called Arvind sir then. They had to come in. I'm really sorry. I'm really sorry. I apologize for that. Gora sir, then Anvin sir. Let's just like. I'm really sorry. I'm sorry. No, ma'am, it's actually, I'd left my phone behind. I'm sitting in another room. Thank you so much. Yeah, and I apologize for the delay. I'll rejoin. Okay, I'll just rejoin. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you for being so sweet and welcoming me again. Welcome, ma'am. Thank you. I'm sorry. Where did we stop? I wonder where we stopped. So I'll just share my PPT with you. Just wait. Welcome, ma'am. So I think I'll just start here. I'll just go back. I'll go back a bit. Where were we here? कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर थे? From the second slide. यहाँ पर थे? कहाँ पर थे? Here or later? Second slide. Module 10 थे Second सर, slide. मैम। Second मतलब यहाँ पर? आप मुझे नो मैम, आगे मॉड्यूल 10 पे थी। और प्रीवियस जी, जाइए जी। previous। यहाँ पर थे? इसी पे। जी जी। No, okay, No, ma'am. okay. अब मैंने फोन सामने रख लिया, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो प्लीज गिव मी अ रिंग. सो सिंपली दिस मैं ये बताना चाह रही हूँ, जस्ट टेक अ लुक एट दिस. दीज आर स्ट्रेटेजिक प्लान्स. आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे अगर, तो आपको इमीडिएटली ये दिखेगा. जहां पर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का देखिए, होम अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान. सिमिलरली इग्नू का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. जेएनयू जाइए, एएमयू जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. हर यूनिवर्सिटी आज की तारीख में अपने वेबसाइट पर अपना स्ट्रेटेजिक प्लान देती है. उसका नाम वो कुछ भी दे. जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखिए स्ट्रेटेजिक प्लान लिखा हुआ है, इग्नू ने लिखा हुआ है IDP, institutional development plan लिखा हुआ है. So these universities are all major universities and all credible higher education institutions, even colleges. Like you go, you'll find St. Stephen's College Delhi, or you'll find another college, IIT Delhi. You'll find they all have on their websites in the public domain release their plan for the future, right? And these can be of varying duration. Some universities make 3-year plans. Some, आप ऑक्सफोर्ड का देखिए 6 साल का प्लान है, 18 to 24, and you can have them for varying durations. So it depends, right? But these are plans for the future. कई बार जब ये बहुत लंबे plans बनाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड का 6 year का है, तो they must have broken it down into annual plans. ठीक है, तो 18, 19, 19, 20, 20, 21, they go like that. तो जब लंबे प्लान होते हैं तो उनको वार्षिक प्लानों में तोड़ करके उसका जो कंसोलिडेटेड होता है उसको कंसोलिडेट करके एक लंबा विजन भी वो अपना देते हैं. तो यूनिवर्सिटीज क्यों करती हैं? यूनिवर्सिटीज इसलिए करती हैं क्योंकि जैसे हमें अपने निजी जीवन में भी प्लानिंग या नियोजन करना होता है, वी नीड टू प्लान इवन पर्सनल लाइव्स.
right? Some people are very happy-go-lucky. They never do any planning. They are lucky people. But many people plan. Like you plan, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को कार खरीदनी है, हर चीज प्लान करनी पड़ती है. Similarly, an institution, whether it is a school or a university or a college, has to plan for its future. Financial needs, space, infrastructure, what courses to introduce, how to expand their operations, how to upscale them, how to maintain quality, everything has to be planned, right? Without planning, you will fail. So for progress, for academic growth, even for survival, just to survive, you need a plan. So these are definitions. We don't need to go into this. We don't have that much time. What is planning? Angrezi wale, if those from English, you can just take a look at this slide. Hindi में मैं मुख्य बिंदु बता देती हूँ. Deliberate, disciplined. इसका मतलब है ये सोचा समझा हुआ कदम होता है. ऐसा नहीं कि एक दिन वाइस चांसलर साहब बैठे किसी नैपकिन पर लिख दिया प्लान बन गया. नहीं, इसके लिए हमें सोच समझ के भविष्य का नियोजन करते हुए हमें सोचना पड़ता है. कमिटी बैठानी पड़ती है, एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं, खास लोगों को बुला करके प्लान बनाना होता है. इट्स नॉट अ कैजुअल बिजनेस, राइट? एंड क्या है भविष्य के लिए? व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू डू इट, व्हेन विल यू डू इट इन द फ्यूचर, राइट? एंड इट डील्स विथ वेरी फंडामेंटल डिसीजंस. विश्वविद्यालय या कॉलेज से जुड़े हुए जो मूलभूत निर्णय होते हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहाँ पर लिए जाते हैं. Very fundamental decisions have to be taken, which can change the entire nature and scope of the institution. That there are many ways in which strategic management and strategic planning are done. Okay, so planning and management go hand in hand. You know, it's no use making a plan. हमने plan बना दिया कागज पर, फिर बैठ गए, सो गए, तो क्या फायदा है? Plan को implement भी करना होता है. So when we talk of planning, it is almost always seen in parallel or in sync with management practices, right? Planning is a good management practice. अगर कोई जगह अच्छे से मैनेज या अच्छे जगह तरह से चलाई जा रही है, नियोजित हो रही है, उसका अच्छा चल रही है, तो जरूर वहां अच्छा प्लानिंग चल रहा होगा. So that means that if any institution is succeeding, we say it's very well managed. Management is very good. Necessarily there must be planning. They can't do without planning. You know, they can't be haphazard, erratic, अपने मन में जो आया कर दो, इस साल ये कर दो, उस साल वो, not like that. So there are many models of this in management. MBA वाले पढ़ते हैं, business management वाले पढ़ते हैं. These are not our concern. I've just given them for your general interest कि अनेकों तरीके से करी जा सकती है. One of the most popular ways of doing it is called the SWOT analysis. इसके बारे में आगे चल के there's a slide and we can talk about it, and briefly we can talk about it there. There are many in business management. If there's anybody from MBA, they must have studied it in detail. And you can, for business, they say that in businesses you have to look at both external forces and internal, and this holds true for HEIs also, higher education also. There are external pressures, external factors which affect a university or a college, that you have to take into account. आपको सोचना पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार की पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्या है. एंड जहां पर आपका कॉलेज है, जैसे माय कॉलेज इज इन द हिल्स, इन द माउंटेन, आई हैव टू लुक एट माय सोसाइटी आल्सो. सोसाइटी की नीड्स क्या है. सो एंड इंटरनल प्रेशर्स, हमारे यहाँ जो मैन पावर है, जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर, ये जो व्यक्ति है, जो स्टाफ है, वो उनका क्या नेचर है, वो लोग कैसे हैं, कौन है, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी हैं, उनका कैलिबर क्या है, राइट? एंड बिकॉज इफ आई एम मैनेजिंग, if you make me director, I am Ahmedabad, I'll have to run it entirely differently from how I'll run a college in a remote area of Uttarakhand, because my entire staff in a government college in Uttarakhand, right out from the peon to the clerks to the accountant to the teachers, will have been trained very differently from the people maybe in IIM Ahmedabad, which is a management institute. तो उसको चलाने का ढंग ही अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका ही अलग होगा. So we have to look at that. What is SWOT or SWOT analysis? This is something very interesting. Most of you must have heard about it. आप में से अधिकतर जानते होंगे. This is about
assessing the strengths, weaknesses, opportunities and threats. उसका modified version अब threats शब्द को बदल के challenges शब्द हम use करते हैं. We use the word challenges instead of the word threats now. And this you can do for yourself also. What is very interesting is you can do a personal SWOT analysis. But what are your strengths? What are your weaknesses? Because even as human beings, we have strengths and weaknesses, don't we? हमारे में भी तो कुछ अच्छे गुण होते हैं जो हमारी strengths होती हैं. आप अपने बारे में सोचो. Maybe your language is very good. Maybe your English is very good. Maybe your public speaking is very good. और नहीं यार किसी के वो weakness हो सकती है. Maybe your language is very poor, but your mathematics is very good. No? Numerical ability is very good. Some people, they are very good teachers, but very poor researchers. Research skills are poor. Other people, the research is very good, but the teaching is very poor. So we can have, varying permutation combinations of strengths and weaknesses. Similarly, an institution also has strengths and weaknesses. हर संस्था की भी अपने जो होते हैं सकारात्मक पक्ष होते हैं, जो उनकी ताकत होती है, जो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, और हर संस्था के में कुछ ऐसे अवगुण कहें या उनकी कमजोरी कहें हो सकती हैं, weaknesses which are hampering its functioning, जो अभी उसको परेशानी का कारण है और आगे चल के और बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. Similarly, there are opportunities या मौके जो हमारे every individual also, आप और मैं, हमारे भी व्यक्ति विशेष के आगे बहुत सारे मौके होते हैं. हमें पता है ये मौका है या हो सकता है, potential opportunity. And an institution also, like where you are located. For example, I am located in Nainital. Now I know ki if I am the vice chancellor, I know that my institution has opportunities to work on Himalayan studies, right? Like Himalayan geology, Himalayan botany, Himalayan forestry. We are well poised for that. हमारी geographical location ऐसी है. हमारे यहाँ जो अभी तक जो हमारे रिसर्च कल्चर है वो इसकी तरफ ओरिएंटेड है. तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं. उन अपॉर्चुनिटीज को मेरे को अब फर्दर रिसर्च करना होगा, ढूंढना होगा कि क्या फंडिंग्स कहाँ से मिल रही हैं, इंटरनेशनल फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, नेशनल फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, क्या सरकार कुछ दे रही है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से. इंटरनेशनली क्या इज देयर सम लाइक द इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन, आई नो IGU हैज अ होल माउंटेन डिवीजन, तो वहां से कुछ मिल सकता है. तो हमें फंडिंग्स के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, करियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के लिए देख सकते हैं. सो देयर इज सो मच दैट यू हैव टू एक्सप्लोर अगर आप प्लानिंग करने के लिए बैठेंगे. इफ यू आर पुट इन अ कमिटी फॉर प्लानिंग, और इफ आई मेक यू वाइस चांसलर फॉर अ डे, ऐसे अच्छा एक दिन के लिए आपको वाइस चांसलर बना रहे हैं, प्लान बनाओ. सो देन यू हैव टू थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. एंड challenges, problems क्या है मेजर, threats या challenges. Threat actually ये माना जाता है कि फ्यूचर टेंस आ जाता है. Threat means जो खतरा है. What is the danger? Threat is closer to the word danger. So danger नहीं, challenges, चुनौतियां क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जहां पर आप हैं. The problems can be wide ranging. It can be financial problems, financial challenges. पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, इक्विपमेंट खरीदने के लिए नहीं है. द चैलेंज कैन बी एनरोलमेंट गिर रहा है. द चैलेंज कैन बी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है. इट कैन बी वाइड रेंज. जब आप किसी पद पर बैठते हैं, जैसे कि आप कुलपति हैं, इफ यू आर अ वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देन यू गेट, right now maybe some of you are very junior, so you've never really thought of this because you've never really actually felt that you needed to. ना आपको लगता है हम इतने junior हैं, हमारा इससे क्या लेना देना है. But then when as you will, like I said, you will become senior, you will assume positions of important of more and more of responsibility. You will have to assess that also. Threat क्या है, चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है. कभी कभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तो बड़े छोटे छोटे थ्रेड भी होते हैं कि दो डिपार्टमेंट्स अगल बगल में हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी वाले आपका कमरा छीनना चाहते हैं, वो कहते हैं ये कमरा हमको दे दो, आप कहते हैं नहीं ये कमरा हमारा है. तो they can be very small, very petty threats, petty challenges. And sometimes it's just like this, like in my university it happens, there's manpower shortage na. So kai bar university will do this, they'll give one peon and they'll say two departments share the peon.
So there is a fight going on for the clerk, for the peon. हमें चाहिए, नहीं है, manpower नहीं है. So, I mean, it can be more serious problems like major financial lack of funds. You're not in a position even to give salaries, leave alone expansion and development. So challenges are diverse depending on the nature of the institution, its location, its history. Abhi tak kya tha, so that you have to look at. This was an exercise. अगर AMU चाहे MMTTC आपको exercise करवा सकता है. आप लोग अपने अपने institution की जहां से भी आए हैं वहां की आप खुद SWOT analysis करिए. Even if you are very junior, try to imagine that you are the HOD or the principal or the vice chancellor and you think, let me do it. I'll pretend I'm the vice chancellor. Then my university, what are our strengths? What are our weaknesses? I'll tell you, why this is a very good exercise for you, because many times when you go for interviews, many of you will go for interviews. When you will go for interviews, many of you, they ask this question: what are the strengths of your department? What are the weaknesses where you come from? Or they ask you your strengths and weaknesses. So it's good. Practice honi chahiye ki kabhi jawab dena pada to kya jawab denge. Like, I know that when the NAC team comes, NAC comes for visit. When they come, like if they come to my institute, they ask, okay, what are your strengths? What are your weaknesses? So each one of us must be aware of the strengths, weaknesses, and challenges of our own departments also. Now, what are the components when we do strategic planning for, like I said, now you have to do planning for your department. Or you are the vice chancellor. Just pretend you are the vice chancellor for next 30 minutes. You are the vice chancellor. क्या करना होगा? एक तो आपको जितने भी stakeholders हैं, जैसे आपके यहाँ teachers हैं, all the teachers, the deans, starting from the top, you can call a meeting of all the directors and deans of the faculties, and you can say, okay, we need to make our institutional development plan. So you have to explain to them that the UGC has asked us to make it. We have to make it. We'll be making it for a period of 3 years or 5 years. And this is how we will do it. So you have to explain it. Then you have to set up a small committee or a group of people who will take those fundamental decisions. What are the goals of your university? What is your mission? What is your vision? What are your values? These are important steps, right? And then how will you do it? You just don't stop. Goal set kar liya, ho gayi planning. Nahi. How? That you will have to decide strategies. How mein aati hai fir strategies? Kaise karenge? Pura krambadh tarike se. That means step by step planning. Detailed plan of achieving each goal. For example, you have 3 goals. Goal 1, goal 2, goal 3. You need now to then set up committees. Committees banengi. वो बैठेंगी, वो decide करेंगी, research करेंगी. Then they'll decide on the pathway. ये रास्ता है कि goal तक कैसे पहुंचना है. And thirdly, indicators for success. अब हम रुके ही नहीं रहेंगे कि NIRF में भेजेंगे या NAC आएगा तब देखा जाएगा. यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का अपना भी इंटरनल मैकेनिज्म, आंतरिक भी कोई तरीका होना चाहिए जिससे वो वार्षिक रूप से या द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक अपना ये आकलन कर पाए कि हमने जो गोल सेट किया था, जैसे 2024 में हमने कहा ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य 1, तो हम 2027 में आकलन करेंगे या 2025 में कि कितना हो पाया, कितना नहीं हुआ. So you have to measure the level of success in achieving your goals, and this is done usually there is metrics. अगर आप में से किसी ने NAC की प्रोसेस में हिस्सा लिया है, those of you whose college or university has done a NAC cycle, आप लोगों के रहते, you must have seen like NAC has 7 indicators. NAC जब हमें SSR या self assessment report बनाने को कहता है, NAC sends you to make a self study report. They give you 7 indicators, and inside that there are metrics. जिनको metrics समझ में नहीं आता, नंबर देना जैसा होता है कि अपने को खुद नंबर दे लो कि 3 में से कितने आए, 4 में से कितने आए. आप खुद बताओ कि आपका यूनिवर्सिटी कितना, ये रिसर्च कितनी हुई है, बिल्डिंग कितना है, हर चीज का 7 इंडिकेटर है उसके अंदर. दैट इज कॉल्ड मेट्रिक्स. मेट्रिक्स आर मेजर्स ऑफ
their measurement ways of measurement. ठीक है, अभी हम statistics में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा हम इनको, जैसे आप API भरते हो वैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी अपना योर इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था है, अपना तरीका निर्धारित कर सकती है। यू कैन डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वेदर यू आर गोइंग टू हैव अ टेबल ऑफ मेट्रिक्स, वेदर यू आर गोइंग टू फॉलो द NAC model. You can follow the NAC model, you can follow the NIRF model, or you can evolve your own detailed model, which each department फिर decide कर सकते हैं faculty wise। हर dean, each dean can submit their report, each HOD can submit their report right back. So what is, why is it so important? Why are we laying so much stress on it? Because in today's age, the whole process has become very complex. Managing a university or managing a college is not very easy anymore. It's not simple. Our tasks are very complex. इतने सारे काम करने, पहले से तो ठीक था, like universities used to degree awarding kind of thing. Exam conduct किया, degree दे दी, ठीक। कुछ लोग research करते थे, a few people used to do research, okay, fine. But in the past 2 decades, it has become, since 2000, it has become very complex. For us also, look at us now. We have to worry about CAS, we have to worry about API, publications, teaching, so much. And then the entire curriculums and choice-based credit system, credit transfer. It's not easy anymore. And especially in India, for the NEP to be successful, the NEP is a very good vision document. It sees a beautiful, a very radical, but a very good transformation in the system. And to make it successful also, each institution will now have to do its own strategic planning, right? Why? Because what happens is, it is complex. And why do we need it to be integrated? Now, there's a word in my title, integrated. Like, it's not like if I'm the vice chancellor, I'll say, okay, physics department, aap apna bana lo, chemistry, aap apna bana lo. I can't say that. We will have to dovetail, or we'll have to mix or overlap and integrate and coordinate the plans of all the departments in my university or your university or college. So if I'm the vice chancellor, I have 26 departments. Those 26 plans for 26 departments have to fit into each other. They have to be coordinated, smoothly coordinated. क्या होगा, नहीं तो duplication हो जाएगा. Physics wants a lab for 10 crores. Chemistry also wants a lab for 10 crores. In the end, you see, they're both asking for the same equipment. So maybe we need to make a centralized instrumentation facility, जिससे कि duplication ना हो, जिससे कि मैंने भी मांगा, आपने भी मांगा, उसने भी मांगा, सब एक ही जैसा बना रहे हैं, सब गड़बड़। ठीक है। दूसरा क्या है कि कई बार ना हम वो एक फिजिक्स का प्लान जो है वो केमिस्ट्री वाले के प्लान के बिल्कुल विरोधाभासी है, उल्टा है, वो केमिस्ट्री वाले की जड़ काटने में लगा हुआ है। So we have to make sure that they are not working against each other also, the departments, no? Otherwise, he wants to make a building there and that will ruin the, I'm taking a very simplistic example, right? There are other ways of destroying departments, so other than buildings. Number 2, we have to look at collaboration. NEP is laying a lot of stress on multidisciplinary collaboration, inter-university collaboration, intra-university, inter-university, between departments, within departments, with foreign universities. So all these collaborations will have to be planned, right? So that we don't waste time, we don't waste energy. Agar duplication hoga, paise ki barbadi hogi. If we do duplication, we will waste money, we'll waste time, we'll waste energy. So to make things far more efficient, holistically efficient, we need integrated planning, right? Who will do this planning? So usually now, what the modern world says is, pehle se to theek tha, top down planning hoti thi. The vice chancellor will sit, he will call 2-3 of his important people, खास लोगों को बुलाया, plan बना दिया, भेज दिया UGC को. अब नहीं, अब कहा जा रहा है कि you will have to even prove that you involved all stakeholders. सभी हितधारकों को सम्मिलित करना है. Hitadharak mein, there are students, teachers, of course there are the administrators like the vice chancellor, registrar, finance controller, the proctors, deans, directors, but then the teachers, the PhD students, the guardians, the local community,
even the local community. You have to involve in your planning process now. ठीक है? So इसमें internal हो सकता है, external. Internal are those who are coming from inside the institution. External, like the community, and it could be other people there, right? Potential employers, यहाँ placement होगा students का, right? Your students are all wanting placement, so the potential employers, people who employ your students also. Yeah, now this is it's a long process. इतना आसान नहीं. It's not like you can make a plan in 1 or 2 days. Takes a long time, months. At least 2-3 months you need for making an IDP. And then a committee, usually, now this depends, but kahin kuch banti hai committee, kahin kuch banti hai, but this is the general format, right? When is it done? It's not a linear process. ऐसा नहीं कि शुरू करी, like I'm saying, okay, I'm the vice chancellor, 24 का plan बनाना है, शुरू करो, आज से शुरू करो और 30th November हो जाना चाहिए, खत्म plan. No. It's a very long process. Not only that, like 30th November, maybe I will send the plan to UGC. But it will continue. There will be revisions, there will be additions, there will be, updating, because circumstances could change. So it's a very dynamic process. It's not like if you saw Oxford University, I showed you the strategic plan, 19 to 24, 18 to 24. It's not like कि बनाया डाल दिया भूल गए. Continuous revision. लगातार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है और परिवर्तन होता भी है क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, because conditions can change, pressures आते हैं, unexpected happenings and things like that. And then it's cyclical. जहां पर एक plan खत्म होता है दूसरा शुरू होता है. You can't take gaps, right? So it's like 18 to 24. So the planning for 24 to 20 now to 2030 starts in शुरू हो गई होगी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना दूसरा प्लान बना करके तैयार करके डालने की तैयारी में होंगे. तो गैप ओवरलैपिंग होती है, शुरू कर देना है, खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी. न्यू प्लानिंग प्रोसेसेस स्टार्ट एंड डिपेंड करता है. कई जगह लाइक ऑक्सफोर्ड है 6 years, some people make 3-year plan also, 5-year plan, 10-year plan. Usually it does not cross 10 years, but some institutions have very long-term plans also, 15 years, 20 years. एक दो जगह 30-year plan भी आपको मिलेगा, but then it's not like उन्होंने 30-year बनाया, डाल दिया और भूल गए. Then they make annual plans. तो क्या होता है, वो इंक्रीमेंटल प्लानिंग होती है. 30-year विजन भी डाल दिया कि नेक्स्ट 30 years, दिस इज आवर प्लान फॉर 30 years, दैट इज देयर लॉन्ग टर्म प्लान. देन देयर इज अ मिड टर्म प्लान एंड दे हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स आल्सो. एनुअल प्लानिंग भी करी जाती है. Sometimes what happens in many institutions, if the leader changes, like the vice chancellor changes or the chancellor changes, sometimes very dramatic changes happen in the plan, because sometimes you have very strong academic leaders who come in and they feel that nahi yaar ye university to barbaad ho gayi hai, kharab ho gayi hai, this is not okay, I want to make really reform it and I want to do something good. They can make very big changes in the plan, or they can make a new plan. They can entirely scrap the old plan. ऐसा कुछ नहीं है कि प्लान का रिवीजन नहीं हो सकता है. You are allowed to, the academic leadership, with the approval of the mandated body. In many universities, the executive council passes it, right? So if there is any established procedure about who will, okay it, then they'll again, revisions will have to go through that body. So how is it done? We talked about it. What are the major steps when we talk of strategic planning? The first thing is to understand your current situation. Like if I ask you right now, I give you an exercise, I don't have time, I say make a plan for your department. Okay, I've made you HOD. Today you are HOD of your department. एक दिन के लिए मान लिया, अभी आप 15 मिनट के लिए आपको HOD बना लिया, प्लान बनाओ. पहली चीज है समझ, a deep understanding of how your department works. उसकी हिस्ट्री क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, what is the history. Each department has its own unique culture. और वो कल्चर कई बार तो जनरल होता है, बाकी डिपार्टमेंट भी वैसे ही होते हैं, पर कई बार कुछ ऐसा एक कोई हेड रहा होता है, वहां कोई HOD, some old HOD was like this, he starts certain practices, And I've seen in my own university that each department has its own culture. Wherever there have been strong HODs, some stalwart, big personalities, they started, even small practices like a tea club. हमारे यहाँ कुछ departments where there's a tea club. There's established time at 1 o'clock. Everybody will come into the tea room and they will sit down and they'll have tea together. You can't miss tea time because that is the time.
But some departments nobody cares, मर भी गए, बगल वाला मर भी गया तो कोई मतलब नहीं है. So that depends on the culture of the department, and that culture has been made by our seniors many times, by the history of the department. So you have to understand that, and then you have to understand what is happening, external factors, internal factors. You have to understand what your colleagues are like, juniors kaise hai, colleagues kaise hai, seniors kaise hai, what the HR is like, human resource. Then you have to have your own, you have to be a leader and to make a plan. There has to be a vision, there have to be goals, there have to be values. What do you stand for? किन चीजों को आप अच्छा समझते हैं, ठीक समझते हैं, किन चीजों को आप बेकार समझते हैं? Values, क्या सही है, क्या गलत है? What is right, what is wrong is determined by our values. And then we have to, choose priority areas, because we can't do everything, right? Like I'm the Department of Political Science. Now I can't say, no, हमारे department में IR पर, international relations पर भी research होगी, human rights पर भी research होगी, gender पर भी होगी, this पर भी होगी. We'll specialize in everything. No. Usually any department that really does well, then usually focuses on certain key, either on one area. Like I know we have a department called geology, which specializes in Himalayan geology, and they are very successful. So you have to prioritize. This is just an example, you have to choose in financial planning, you have to prioritize किस पर खर्च करेंगे, किस पर नहीं करेंगे. And then plan, like I've told you, I've said this, just making a plan is not enough. You have to then execute the plan. Plan को कार्यान्वित, क्रियान्वित भी करना होता है. And don't forget to measure progress. हम बात कर चुके हैं. You will need indicators. आपको जैसे API score में indicator होता है, NAC का indicator होता है, metrics होती हैं, या API, KPI, वो करना होगा. So let's just skip this. What is a vision statement? मैंने कहा ना, one of the very important things that is done in strategic planning is that we decide the vision from the first steps. You do a self-analysis. First, you have to do self-assessment. सबसे पहला चरण होता है आपको या तो SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, या कोई सी अपने इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करना होता है. इट्स लाइक अ सेल्फ ऑडिट. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक चल रहा है, आगे क्या मौके हैं, क्या गड़बड़ हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग. यू हैव टू हैव अ डिटेल्ड सेल्फ असेसमेंट of yourself, your department, your faculty, your campus, your college, your institution, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिसका भी करने को कहा है. First self assessment or self audit. After that, you need to decide on these. What are your values? What do you stand for? Stand for मतलब आप किस चीज के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, आप किन चीजों को उत्कृष्ट समझते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी संस्थान के लिए कौन चीजें अच्छी हैं. जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे वैल्यूज है कि माउंटेन एरिया डेवलपमेंट हो सकता है, या हो सकता है मेरा आई एम ए जेंडर स्कॉलर. हाँ, मैंने अपना जब परिचय दिया तो मैंने आपको बताया मैं डायरेक्टर हूँ. मेरा काम है सोशल साइंस की, मेरा काम महिलाओं पर था पहले, अब जेंडर पर काम है. आई एम ए जेंडर स्कॉलर. So अगर मेरा काम जेंडर पर, मे बी I might say that I want my institution to actually to work for women, upliftment of women, and every department, फिर all departments will actually do women centric. Every department must have some project going that is related to female empowerment. ठीक है. या मेरा हो सकता है my value is community development, कि local communities का विकास हो, ग्रामीण विकास. No, it could be that value could be community development. किस चीज को मैं सबसे ऊपर रखूंगी, सर्वोपरि? What do I think is the best thing? What is good according to me and what is bad according to me? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये निर्णय हमें करना होगा अपने संस्थान के लिए. क्योंकि जब ये निर्णय कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना. और क्या मैंने तो हवा में कह दिया, महिलाओं का उत्थान. हमारी वैल्यू है महिलाओं का उत्थान, पर्यावरण का संरक्षण और पहाड़ी क्षेत्र का विकास. आई एम जस्ट टेलिंग यू आवर वैल्यूज. मेरी यूनिवर्सिटी की वैल्यूज है कंजर्वेशन ऑफ द माउंटेन एनवायरनमेंट, empowerment of hill women, and maybe something else to do with the hills, right? Mountain development, environment conservation, women development. 3 है. हम इन चीजों को अच्छा मानते हैं, ये चीजें हमारे लिए सबसे ऊपर है, वैल्यू है. हमारी वैल्यू क्या है?
नारी का विकास, हमारी वैल्यू क्या है, पहाड़ का विकास, हमारी वैल्यू क्या है, पर्यावरण संरक्षण। 3 वैल्यूज है। अब ये हवा में कह के क्या होगा, दीज आर वेरी जनरल थिंग्स। अब आपको स्पेसिफिक गोल, इसको गोल में ट्रांसफॉर्म करना है। गोल मीन्स टैंजिबल, जो कागज पर जब लिखे तो दिखे क्या क्या करोगे। It will have to be time specific. गोल के साथ टाइम जोड़ना पड़ता है। My target is to skill development and subsequent employment of at least 1 lakh women per year for the next 5 years. ये गोल हुआ। My target is development of integrated development plan for at least 500 villages in 1 calendar year for the next 5 years. ठीक है, तो मैंने उसके साथ समय जोड़ा, नंबर जोड़ा, उसको परिसीमित किया, कंक्रीट बनाया, ठोस बनाया। turning my value into a concrete goal. I will skill and employ 5 lakh women, 1 lakh women every year, 5 lakh women in 5 years. That is a goal. थर्ड थिंग, ये कई बार आपको भी लिखने को बोलेंगे, दे माइट, योर हेड माइट से भैया विजन स्टेटमेंट लिख दो। व्हाट इज अ विजन स्टेटमेंट? विजन स्टेटमेंट इज अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट, is a very broad statement, and the broad statement is your dream. It's a long-term goal. When we see a long-term goal and we say long-term, दूरदर्शी, दूरगामी सपना सा होता है कि हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, right? Like I was told you values and goals example, it could be that my goal is the integrated development and development of Kumaon region of Uttarakhand, Himalaya, right? Into a model mountain state, into a model mountain region. ये एक सपना है कि उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र एक आदर्श पहाड़ी क्षेत्र बन जाए। ये सपना है। It's long term. I'm not fixing a time to it. कोई टाइमलाइन नहीं है, सपना है। It's a dream. मिशन जो है वो छोटा होता है। मिशन स्टेटमेंट में बोलना पड़ता है कि आज की तारीख में मेरा यूनिवर्सिटी इस सपने के लिए क्या क्या काम कर रहा है। What am I doing? How am I doing it? Why am I doing it? So vision can be that dream that Kumaon area of Uttarakhand should turn into an ideal mountain area. Dream. Mission, I have to say, what is my university doing today? Kumaon University is running so many skill-oriented courses. Kumaon University runs skill-oriented courses. Kumaon University is involved in training of women in 700 villages. Kumaon University is future नहीं, present tense. आज वर्तमान काल में लिखना होगा क्या कर रहे हैं, आज क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं। स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट, महिला का कुछ, गांव का कुछ। So you have to tell for whom, किसके लिए, कैसे कर रहे हैं। उन्नत भारत अभियान running in 700 villages of Kumaon area by teachers and students, right? To achieve what it achieves, achieving high level of sanitation, health and nutrition. कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो एक सपना है, ये आज क्या कर रहे हैं, ये है। So this is the difference between these 4 things. So vision statement declares mid-term and long-term goals. Mission is what we are doing right now. So you again, like I said, AMU, MMTTC, I would request you to ask them to write down their vision and mission statements of their departments at least, right? What are IDPs? Hamari government of India and UGC is using this term IDP. Nothing else. What I told you, it is the plan. UGC gives us very detailed guidelines. Look at the link that I have given at the bottom of the slide. There's a 58-page document. Online hai. Online click करिएगा. Just Google में type करेगा UGC guidelines IDP, Institutional Development Plan Draft. You will get the entire booklet निकल आएगी आपके पास, 58 pages. UGC ने हमें step by step बताया है कैसे करना है. So if you ever need to reference it, it is there. If you have additional time, please do at least open it and एक बार पन्ने पलट के तो देखिए क्या है इसमें.
इंडिया में इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के लिए यूजीसी इन इट्स गाइडलाइंस गिव्स अस दीज स्टेप्स. Need assessment, I told you how. Self analysis, self audit, it can be a SWOT analysis. Goal setting, I just talked about institutional values. What does your institution stand for? And then goal is tangible, ठोस लक्ष्य. आपकी जो मूल्य है, मूल्य से लक्ष्य तक आना गोल सेटिंग है. Then implementation plan, इसके लिए आपको then you'll have to, जैसे goal 1, I gave you an example, महिला उत्थान. तो अब महिला उत्थान के लिए 5 काम करेंगे. 5 कैसे करेंगे? कौन सा विभाग क्या करेगा, कौन सा विभाग और कैसे करेगा, कितने गांव में करेगा, टीम साल में कितनी बार जाएगी, उसका असेसमेंट कैसा होगा, पूरा डिटेल में बनाना होगा. दिस इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज टू बी वेरी डिटेल्ड एंड इट हैज टू बी सो द गोल्स, लाइक यू हैव 5 गोल्स, 1 2 3 4 5, each will have to be worked on अलग से. ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे सबको लिख दिया, अलग अलग कमिटी बैठाएंगे, अलग अलग पे अलग अलग प्लानिंग होगी. डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान कवरिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. याद रखिए, कोई भी प्लानिंग होती है उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट की प्लानिंग बहुत जरूरी है. कितना खर्चा होगा, बजट क्या होगा, बजट के हेड्स क्या होंगे और ये पैसा कहां से आएगा. आर यू सीकिंग फंड्स फ्रॉम, आर द फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल, क्या ये पैसा ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास है, डू यू हैव द मनी, इफ नॉट वेयर विल यू गेट इट फ्रॉम, will you ask for grants, will they be, is it self financed, if it is self financed, how will you generate that finance, that has to be done. And the next step 4, very important, monitoring and evaluation. I told you, external monitoring and evaluation through NIRF, NAC, etc., AICTE, DCI, many bodies, but internally each university should have a self-assessment procedure, and usually this is done through the IQAC, Internal Quality Assessment Cell. Each institution has IQAC and should have IQAC, and usually the IQAC looks after this aspect. And as in everything else in life, feedback is very important. Unless and until there is feedback, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे हमारा क्या प्रोग्रेस हो रही है. I told you, annual feedback is needed so that you can, if something needs to be stopped, something is damaging, becoming negative, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रोको उसको बदलना है, बदलो, change it, revise it, improve it. So you have, it is a continuous process. So in India, the government is stressing on integrated approach. आपको बताया ना, उसको सम्यक बनाना, उसको जोड़ना है, सब आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए. And each institution you can't copy paste. हाँ, एक दूसरे का copy paste नहीं करना है. DU के प्लान के साथ ये हुआ. This happened with DU last year. They put up a plan and then they had to take it down. DU ने अपना उतारा, फिर रिवाइज करके डाला. क्यों? क्योंकि उनको कहा गया कि this is copied. They said large portions are plagiarized. So you can't plagiarize. You can take ideas, but you cannot plagiarize. आपको अपना अलग बनाना. ऐसा नहीं कि किसी का लिया, नाम बदला और डाल दिया. ऐसा नहीं. हाँ. So there are many things. Clarity चाहिए. एक तो पहले स्पष्टता. Who are you? आप कौन हो? आपका इंस्टीट्यूशन की जरूरत है. Like understanding the needs. That self audit is a very, very important step, right? You have to identify the capacities कि हमारे, मैंने कहा ना, अगर मैं I am very, मेरी यूनिवर्सिटी IIT दिल्ली से बहुत अलग है, IISc बैंगलोर से बहुत अलग है. There are differences between me and IISc Bangalore in all aspects. Nature of the work, our goals, our vision, our staffing, the kind of staff we have, training of the staff, human resource. So I have to understand who I am first, who my HR is, human resource क्या है. Right. And annual activity plans होंगे. ऐसा नहीं कि 10 साल का बना के छोड़ दो, हो गया, just dump a 10-year plan. No. It should be transparent. All stakeholders have to be involved. Vice Chancellor or principal can't sit in his room, make it and just dump it on the internet. No. And you have to, now NEP wants us to have certain goals. So you have to factor in these things. One is internationalization. I talked about it. I talked about intra-university, inter-university collaboration. मैंने शब्द use किए थे. And then I said even with universities abroad, that is a big thrust. Plan करिए. How can you involve yourself with departments in universities abroad, have MOUs, have understandings, memorandum of understanding, समझौते, कार्य के लिए समझौते इत्यादि.
एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, बिकॉज वही है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है बच्चों की, और बच्चे सब सरकारी नौकरी के लिए जाएं ऐसा नहीं करना। इंटीग्रेशन ऑफ स्किलिंग, यू नो दैट अ वेरी बिग thrust is now on skilling India. So we need to have programs for skilling, reskilling, right? Reskilling मतलब कोई लोग पुरानी पद्धतियों का प्रयोग करें, people are using old skills, we have to unlearn those skills and learn new skills. So the universities or HEIs have to make plans for this also. Government is not going to do this. We have to be involved in the skilling India also, right? So we have different kinds of, you need to evolve indicators. Har department se, har section se, you'll need performance appraisal. You have to keep checking what they are doing as per the plan. Plan kuch hai, departments kuch kar rahe hain, everything is falling apart. Then at the end of your plan period, you will say what happened, right? So this is what is most important. We need good academic leaders for this. Good planning is and good management. We need good academic leaders. मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी. One of the major tasks of leadership, because, is to clearly define the institutional plan. तो लीडर का काम ही, एक बहुत बड़ा काम ये होता है, academic administrators जो हैं, the vice chancellor, the chancellors, the directors, deans, and other people, this is their work. And this is part of both their informal role and their formal role. They are linked to this. How? Because in their informal role, when we talk of academic leadership, it's of many kinds, charismatic, then transformational. But the best, because we have NEP right now, NEP आया है, बहुत सारा बदलाव लाना है, we have to bring about many changes. We need leaders who are transformational leadership जो दिखाएं परिवर्तनशीलता जिनमें हो, जिनके नेतृत्व में, और करिश्मा हो, charismatic, transformative leaders are the need of the hour, who can do strategic planning very well and then manage accordingly. मैंने कहा ना, planning is nothing. You make a plan, lock it up in a cupboard, it's nothing. Planning has to be executed. So management is needed. So then comes the role of academic administrators, and they have two kinds of roles. One is the informal and the formal. इनफॉर्मल में उनका करिश्मा, उनकी पर्सनालिटी, ये भी बहुत काउंट करती है, एंड फॉर्मल में उनका जो मैनेजमेंट स्किल्स, प्लानिंग स्किल्स हैं, वो काउंट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं. बट इन बोथ दीज एस्पेक्ट्स, एक आदमी है, उसका इनफॉर्मल रोल भी है, फॉर्मल भी है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस पर भी बेस्ड है, और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. बट इन बोथ ही इम्पैक्ट्स व्हाट? वैल्यूज, goals, mission, vision, and then setting up of all of these. So just look at the thing, he decides, he helps, has a major role to play in deciding the values, the goals, the objectives, and then in executing these. I think I'll just stop here because I can have 5 minutes if you want for, we can talk a bit. And so if you want, you have anything to add? Have you in your life ever been involved in any planning roles? क्या आपको कभी मौका मिला है planning का हिस्सा बनने के लिए? Have you ever had any chance? कभी मौका मिल पाया आपको? हेड ने कहा कुछ बनाओ, प्लान बनाओ, कुछ करो, मिशन स्टेटमेंट लिखो, विजन स्टेटमेंट लिखो, ऐसा कभी आपके हेड साहब ने बोला, कभी प्रिंसिपल ने बोला? Have you ever had any experience of this, of planning? Yes, ma'am. Good afternoon. I am Dr. Snehilata. When I was in a private university, that is Integral University in Lucknow. So I was in there in 2020. Then NAC is coming, and then we have just derived the criteria, fill the criteria, and just making vision and mission of the university. So I'm just involved in this type of activity. Yes, Lata, you got lucky. You got a chance to do it. It's not easy because it's pretty mind-boggling. जिसको कहते हैं, ऐसा लगता है कि what is expected, क्या लिखें. It seems very, tough that. How to write it. It's a tough exercise. But मैं चाहूंगी कि मैंने जैसा आपको बताया, module 10 requires that you should all be doing discussions on this, etc. But if you want to, you can, when you go back today, you can try writing the vision statement. कम से कम जो सपना है, ये imagine करिएगा कि आपको आपके कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है, या you are the vice chancellor. Just imagine एक
हम इसको पॉलिटिकल साइंस में थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, सोशल साइंस में थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, जस्ट डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट वेयर यू इमेजिन दैट यू आर द vice chancellor or the principal or the whatever the HOD, and then try writing the vision statement. Vision statement means long term, mid term goal. आप क्या चाहते हैं, आपका आदर्श विभाग, like if you're from physics, what would you like that after 20 years or after 10 years, what should your department of physics be like? जैसे फॉर एग्जाम्पल इट हैपन्स कि कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना परिस्थितिवश ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जहां हमको कोई भी आदर्श स्थिति नहीं मिलती है. मेनी टाइम्स वी आर वर्किंग इन कंडीशंस वेयर, especially at your stage, you know, you're looking for other jobs and you're working and you imagine that someday I'll go and work in, you know, JNU, or I'll go to IIT, or I'll work in DU. But right now you're maybe in affiliated college somewhere in a remote area, and your department is not in very good condition. There are not enough facilities. No, very often it is happening to all of us, not good facilities. Like you're from science and the lab is bad. So when you write the vision statement, what will the vision statement be? आपके लिए क्या होगा? What should your department be like 20 years from now, 15 years from now? आपका आदर्श विभाग कैसा होना चाहिए? वो आपके विजन स्टेटमेंट में आएगा, और वो एक ही सेंटेंस बनता है. यू कैन राइट ओनली वन सेंटेंस. एक वाक्य लिखना होता है. मुश्किल इसलिए है कि एक वाक्य लिखना है, उसी में सब कुछ आ जाना है. तो यू कांट राइट अ पैरा कि 5-6 में लिख दिया कि वहां अच्छे इक्विपमेंट भी होना चाहिए, और वहां हमारे लिए अच्छे कमरे भी होने चाहिए, और अपनी लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट होने चाहिए. ऐसे नहीं. यू विल हैव टू कंडेंस इट and bring everything into one sentence. So it's like a, you know, interesting exercise. Words में ना पहेली टाइप की बनानी पड़ती है. You have to make it interesting and you have to make it meaningful. ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया. आजकल एक बड़ा common है, pursuit of, you know, excellence in education. Now that is like a very generalized, very generic statement. You know, pursuit of excellence in education. Okay, it's okay. There's nothing wrong with it. But then for your department, it would have to be far more specific. It would have to link to the discipline. If you're from physics, you could talk about the research quality, right? Because you're more research oriented. Or somewhere else, a department like social work or sociology could talk about community engagement there, no? To work for the local community. So any department, of course, now community linkage is expected from all departments. If you have heard about it, the latest NEP says that all departments, even if you're mathematics department, you have to work with the local community. You can't say, hum maths wale, hum nahi jayenge bahar. So you have to work with even there. So try this exercise just for fun. You can try writing the vision statement either for your department or for your institution. It should be a good challenge, and then you're preparing for the day when you will become HOD or Vice Chancellor. Like I said, I pray and I wish that you, all of you, rise in your careers and you assume positions of importance, and we also hear about you and meet you then. तो कोशिश करिए किसी दिन, क्या पता बन जाए, आप जल्दी कुलपति बन जाए या हेड बन जाए. Thank you so much, ma'am. Thank you. तैयारी है विजन स्टेटमेंट. Thank you so What much, is ma'am. your ideal department like? Thank you, ma'am. Actually, Thank you, ma'am. there was a lot more that we could have, you know, talked about. Do you have any questions? Thank you, ma'am. You want to add? Thank you, ma'am. Thank you, We have ma'am. 1 minute. Thank you, We have ma'am. 1 minute left. Anything you want to say? Anything you want to add? कुछ कहना है, कुछ बोलना है. I tried speaking in both languages, तो समय बहुत कटा, क्योंकि जब आप दो में बोलते हो तो उतना अधिक समय लगता है. I tried speaking in both, so I had to cut short actually my presentation, but that doesn't matter. I've just given you an introductory overview to what all this is about. Module 10 में क्या आता है? I've given you because module 10 के हिस्से है ना, planning, management and governance. I was told to talk on strategic planning. I've given you an overview and introduction to what strategic planning is all about, and then I think you will be having more lectures on governance, because NEP has brought about many changes in governance also. You must have heard about HECI, HECI जो बनने वाला है, उसके नीचे 4 verticals हैं. फाइनेंस के लिए अलग बॉडी होगी, मॉनिटरिंग के लिए अलग होगी. So that I think in another lecture somebody else will deal with that, because I was supposed to talk about planning. So I've just talked about planning and how
The UGC has given us detailed guidelines for institutional development plans. And if any of you wants to read it further, just go Google it. You'll find the 58-page guideline by UGC. There they've explained it very simply, step by step. All right. So no questions, no comments. कोई भी प्रश्न या कोई बात आप अपनी बात कहना चाहते हैं? नहीं? तो इसके साथ ही नहीं तो मैं आपसे विदा लेती हूँ. I will take your leave. Thank you, UGC MMTTC AMU. I think Mr. Zaidi is perhaps linked with us, the technical team. Thank you. I've exceeded my time by 1 minute, so I think you'll have your lunch break now. आप लोगों का Yes, lunch. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will not keep you from your lunch. Yes, ma'am. किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. You had lost 5 minutes there, but मैंने time पर खत्म करना ठीक समझा. So okay, thank you very much, and thank you UGC ma'am. MMTTC. Thank you, ma'am. Ramendra Solanki ji wants to say something. Ramendra ji, just a minute. Ramendra wants to say something. First of all, good afternoon, ma'am. And, Good afternoon, Dr. Solanki. Yeah. मैम आपने बहुत ही अच्छा एक मॉडल 10 के ऊपर हमें बहुत अच्छा अपनी एडवाइसेस ने लेक्चर दिया और जो मैम आपने शॉर्ट जो आपने समझाया मैडम ये हमारे के लिए बहुत ही टोटली जैसा कि आपने बोला कि कल हम ऐड करते हैं या आगे कहीं और भी आगे जाते हैं तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट ये सब चीजें मालूम होनी और ये मैम आपने बहुत ही अच्छे से समझाया बहुत ही अच्छे उदाहरणों के माध्यम से इसके लिए थैंक यू डॉक्टर सोलंकी. आई थिंक स्वॉट तो हमें अपना भी करना चाहिए. आज जाके घर जाकर के सब अपना भी स्वॉट करिएगा. Because SWOT is very good to know. Self assessment. आजकल तो लाइफ ऑडिट की बात चल रही है. लाइफ ऑडिट इज अ वेरी पॉपुलर कंसेप्ट. कहा जाता है कि ईच पर्सन शुड डू अ लाइफ ऑडिट. कि आज आप जहां खड़े हैं जैसे बाकी चीजों का ऑडिट होता अपना करिए. And that is that. Thank you, Dr. Solanki. Was there something else you wish to say? No? Thank you, ma'am. With that, bye bye. And in absentia, I would like to thank Director AMM. Ma'am, please share PPT. I'll share with the technical team. So in absentia, I would like to thank Professor Faiza Abbasi, a very dear friend and dear colleague. Like she says, we are the women directors, so we are greater friends because itne directors hain, we are the women directors. Thank you, Dr. Abbasi. Thank you, Professor Jamal. He is coordinating the course, I think. And thank you, I think it's Mr. Zaidi who is looking after the technical aspect. Thank you in absentia, everybody. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Nainital Thank you, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. आमंत्रित कर रहे हैं. I hope you will visit HRDC Nainital to do some course. Come and do some course if you want. All right, it's a lovely place. Come. All right. Bye, all of you. Good luck for your future. आप सभी को आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. All right. Thank you. Thank you, ma'am.